Taha. Welcome to we are just starting. Uh, Thank you for taking time out and thank you for taking interest in it. Uh, these are the items that you need. Uh, you know, your smartphone or your laptop, and a good internet connection is important because even in the last lecture, uh, a number of students they wrote me later, and in fact some of them WhatsApp me that they did not receive, they were not able to hear me clearly, and one reason is your internet connection for that matter. uh, right. Today again we'll be starting with concepts, and mostly we'll be talking about concepts, and we will see how these concepts are applied in MCQs, right? Uh, the first of the concept is matching. Uh, Matching here is you match the revenue with the expenses to calculate the profit. So what we mean by matching is that the revenues are matched with the expenses for that particular period to ascertain the profit or loss, right? So it's expenses for the year match with revenue for the year, right? And to calculate the profit or loss. Let's see the first question we have, right? Okay, let's discuss them one by one. Number A is lease. Lease asset is long-term lease is when we buy an asset, right? And we use it like owner. We may not have the title, but we use it as owner. So commercial reality is that we own it. Like the example I gave in the class, that suppose you buy two cars. One you buy on cash. You paid the whole amount, say 2.6 million, uh, right? And you bought a new Civic, right? On the other end, you bought another Civic by paying only 600,000 and lease it like for 2 million from a leasing company. Up, who is paying for the petrol? Your company, for both of the car. Your company is using both the cars for the whole year. I mean, for its own economic life. Like put it this way: you have two managers, marketing manager and operations manager, right? And you bought a Civic for each one of them. So you bought two Civic. One you paid cash, the other you lease out. You paid an initial amount and then you lease it out. But you're paying for the petrol for both the cars. You're paying for insurance. You're paying for repair and maintenance, and both the cars are used by your business people 365 days a year, 24 hours a day. You know, so commercial reality is yes, both the cars belong to the business. Legal form says one of the car belongs to you and one of the car belongs to leasing company. So that is what we call substance over form.
The second one, depreciation. Charging depreciation is an example of matching concept. Number D is materiality. You know, when the amount is insignificant, you simply record it as revenue expenditure. Significant or insignificant amount is the concept of materiality, right? So over here, our concept that applies matching is depreciation, right? Let's move on to the next one. Okay, that's good. I mean, you gave this right answer. Now coming to consistency concept. Consistency concept says that the accounting policy should be consistent from one accounting year to another accounting year. And we said like accounting policies of depreciation. You can charge depreciation two ways. The more, but let's restrict ourselves to two today. One is a straight line and the other one is reducing balance. So if you use a straight line, meaning you have to use a straight line in 2014, 15, 16, 17 and 18, you cannot keep on changing. If you're using reducing balance, you will use reducing balance in 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. All the way till the life of the asset, you use the same depreciation method, right? You should not change the depreciation policy. Are we clear about that? Or inventory valuation, that is first in first out in average. But let's move on to the question and let me know the answer. Right, good tha, great dua, very good Abira. Let's discuss them one by one. Consistency concept कहता है कि you should not keep on changing your policy. अब यहाँ policy change हो रही है depreciation की. पहले एक मेथड था, फिर वो दूसरा मेथड हो गया, राइट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है that the company has neither the intention nor the necessity to wind up itself or to curtail its business on a material scale. It should continue to operate for a foreseeable future, right? So यहाँ foreseeable future की बात नहीं हो रही, यहाँ तो depreciation policy change की है उसने, right? From one method to another method. That is not following consistency concept, right? Historical cost concept कहता है कि you record the asset and the expense at the amount at which you have paid or incurred. Like अगर आपने एक second hand Honda Civic खरीदी है 2014 की for 1.3 million, right? You will record at 1.3 million despite one of your cousin says ये तो बड़ी अच्छी bargain है, market price 1.9 million 6 million है. Your neighbor says ये तो बड़ी bad deal है, market price 1.1 million है. आप इन दोनों को इग्नोर करेंगे, जो अमाउंट आपने पे किया है वो आप रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. A materiality says amount significant है, insignificant है, right? So over here our answer is consistency because the depreciation policy has been changed, right? Okay, let's move on to the next one.
Okay. Uh, the thing here is मैचिंग कॉन्सेप्ट इज उस साल के रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंसेस से मैच करते हैं, राइट? देखिए एक चीज ऐसी है, फर्ज करें सैमसंग नया फोन लॉन्च कर रहा है, राइट? अभी उसने S9 लॉन्च किया और वो काम कर रहा है S10 पे, राइट? नोट 10 पे। अब नोट 10 पे अगर वो काम कर रहा है तो अभी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उन्होंने इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, उनको लैपटॉप्स दिए हुए हैं, उनकी सैलरी वो सब की सब जो है 2018 में वो कर रहे हैं, राइट? लेकिन 18 में नोट 9 आया ही नहीं है, ओ सॉरी नोट 10 आएगा 2019 में और परहैप्स 2020 में। सो अब वो क्या करेंगे कि जो भी कॉस्ट उसकी डेवलपमेंट में खर्च हो रही होगी उसको उस साल की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए वर्ड यूज होता है डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट? और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर अगर नोट 10 की लाइफ 4 इयर्स होगी तो ओवर 4 इयर्स उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे और चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। फर्ज करें नोट 10 को डेवलप करने की कॉस्ट है $10 मिलियन, राइट? नोट 10 पे कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके सैलरीज, जो उनको लैपटॉप्स दिए हुए हैं, जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सब नोट 10 पूरा डेवलप हो गया, उसकी कॉस्ट है $10 मिलियन 2018 में। 2018 में वो $10 मिलियन इनकम स्टेटमेंट को चार्ज नहीं करेंगे, वो उसको लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और फिर 2019, 20, 21, 22 में ना उसको $2.5 मिलियन अमोर्टाइज करेंगे। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक ये भी है कि उस साल अगर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, देखिए नोट 10 उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया 18 में, तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो वो रेवेन्यू कब जनरेट होना शुरू होगा, वो होगा 2019 में, तो कॉस्ट 2019 में चार्ज होगी उस रेवेन्यू को। 2020 में उससे जनरेट होगा रेवेन्यू, 2021 में होगा, 22 में होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। Great Dua, brilliant Abira, Ta, that's fine, that's good. Hassan, excellent. Uh, Anusha, just keep on writing these words, capitalization and all that. We'll be discussing them in class, in the coming classes. Certain terminologies that will come again and again, and we'll be discussing them in the class, right? Let's move on to the next one.
Okay, we did discuss about lower of cost and NRV, and net realizable value is selling price less all necessary expenses to make it sell. तो अगर हमारी कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी लोअर है तो हम इन्वेंट्री को एनआरवी पे वैल्यू करते हैं. Now let's go into the next question. इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है और उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है, बट कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना वो उसकी वैल्यू एक अजीबो गरीब हो गई है, उसकी एनआरवी कम हो गई है. राइट, कुछ यूनिट्स हैं जिनकी एनआरवी कम हो गई है. सो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. राइट, अभी एक प्रॉफिट है 106,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,100 और उसके अलावा कुछ इन्वेंट्री मौजूद है. राइट, कुछ इन्वेंट्री मौजूद है और उसकी वैल्यू अभी रिकॉर्ड की गई है 10 के हिसाब से, बट उसकी एनआरवी क्या है, उसकी एनआरवी है 6 पर यूनिट. राइट, और 100 यूनिट्स है तो दैट इज 600. जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम वेटिंग, लेट मी नो योर आंसर्स. दैट यूज योर ब्रेन, इट्स इंपॉर्टेंट. Okay, welcome mine. Your answer is also correct. Ta, your answer is right. Great. Let's see हो क्या रहा है इसमें. रेवेन्यू दिखा रहे हैं 106,000. Are we clear? और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखा रहे हैं कितनी, 2,100. अब वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की है जो आपने सेल्स और रिटर्न पे भेजी है, वो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री है. उसकी कॉस्ट थी 10 और उसकी एनआरवी क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 6. 6 इंटू 100 कितने यूनिट्स हैं, 100 आइटम्स हैं. तो 6 इंटू 100 मीन्स 600. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 की और मौजूद है. 2,100 प्लस 600 बिकम्स 2,700. आई रिपीट इट अगेन. आपने जो इन्वेंट्री दिखाई है ना, दैट इज इन योर वेयर हाउस.
यू हैव सर्टेन इन्वेंट्री ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आपने किसी को भेजी है कि आपको पसंद आए तो रख लें वरना हमें वापस कर दें, उसकी नेट रिलीजेबल वैल्यू है 6 पर आइटम, और कितने आइटम्स आपने भेजे हैं 100, सो 600 वो दैट स्टिल बिलोंग्स टू यू, अभी उसने ये नहीं कहा कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, सो दैट स्टिल बिलोंग्स टू यू, तो आपने उसको अपनी इन्वेंट्री में ऐड किया, 6 into 100 is 600, 2100 plus 600 is 2700. The next thing that you have to keep in mind is क्या आपने रेवेन्यू दिखा दिया अपना, वो 106,000 उसमें वो इंक्लूडेड है, तो उसको माइनस करेंगे आप, राइट, यू विल डिडक्ट 600 फ्रॉम योर रेवेन्यू, जो 106,000 है उसमें 600 माइनस करें तो आपके पास कितना बचेगा, 105,400. आई रिपीट, आपने उसको अपनी सेल्स दिखा दिया, अपना रेवेन्यू दिखा दिया, आपको उसका रेवेन्यू नहीं दिखाना, तो आपने क्या करना, उसको कम करना है, तो कम कितना करेंगे 600 से. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर हियर, राइट, 600 इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और 600 रेवेन्यू से डिडक्ट हो जाएगा, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, अनुषे, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू, हमने उसको ना सेल्स और रिटर्न को सेल्स कंसिडर कर लिया, सो इफ वी हैव कंसिडर्ड दैट एज सेल्स, यू नो दैट इज रॉन्ग, वी हैव टू रिड्यूस द सेल. हमने उस 600 को अपनी सेल्स कंसिडर किया हुआ था, इसलिए हम उसको सेल से कम करेंगे, बिकॉज दैट इज आवर क्लोजिंग इन्वेंटरी, दैट इज नॉट सेल्स. सेल और रिटर्न बेसिस पे कोई चीज सेल करते हैं ना, सेल और रिटर्न बेसिस पे इफ यू हैव given it to any customer, that is not your sales, that is your closing inventory until as the customer accept the items. Okay, matching concept again, we match the expense with revenue, right? Let's see what it says here, right? क्या इफेक्ट होगा, आपको मैच करना होता है एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से, अगर आपने ज्यादा एक्सपेंस पे कर दिया और नेक्स्ट ईयर का है तो वो आपको एक्सपेंसेस से कम करना पड़ेगा, राइट, और अगर आपने कम एक्सपेंस पे किया है तो वो आपको एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा, ये बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास एक अमाउंट है जो आपने पे किया है, बट दैट इज दैट नॉट ओनली कवर्स दिस ईयर, इट कवर्स द नेक्स्ट ईयर आल्सो. सो जो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है वो आपकी इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो इस साल इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता, दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट पीरियड. सो उसका क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे, और उसका क्या इफेक्ट होगा करंट एसेट्स पे. नाउ यू नो दैट प्रीपेड रेंट इज अ करंट एसेट, राइट, तो वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, थिंक अबाउट इट एंड आंसर इट.
ओके लेट्स सी, आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना पे किया है? 5750। इस पूरे साल में आपने ये अमाउंट पे किया। इसमें से 500 बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, तो उसका मतलब वो इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं है। एम आई राइट? यू पेड 5750, right? Out of which 5000 belongs to the next year, 500 belongs to the next year. So आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, जो आपने लिखा 5750 वो एक्सपेंस कम हो जाएगा, प्रीपेड नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रीपेड हो जाएगा। तो वो एक्सपेंस कम होगा, अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? If expense goes down, what will happen to profit? Definitely profit will go up, right? अगर एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। सो यहाँ पे एक्सपेंस कितने से कम हो रहा है? 500 से, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 500 से। एम आई राइट? एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा 500 से, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 500 से, राइट? और नेक्स्ट पीरियड के लिए प्रीपेड एडवर्टाइजिंग बढ़ जाएगा। प्रीपेड, एनी अमाउंट प्रीपेड इज करंट एसेट, सो नेट करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे 500 से और प्रॉफिट बढ़ जाएगा 500 से। था एक्सलेंट, योर आंसर इज करेक्ट। नाउ प्लीज लेट मी नो इफ यू स्टिल डू नॉट गेट इट। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट अगेन। 5750 आपने पेमेंट की है फॉर एडवर्टाइजिंग, उसमें से 500 नेक्स्ट पीरियड का है। सो आप उस एक्सपेंस को कम करेंगे, 5750 को 5250 करेंगे। जब एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इज करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ेगा तो नेट करंट एसेट्स बढ़ेंगे, राइट? आई एम लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अनुशे, नेट करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Net current assets is current assets minus current liabilities, which is also known as working capital. Working capital is also current assets minus current liabilities. And please keep on writing this and throw back all these things in the class so I can respond it in the class as well. Right? Current assets minus current liabilities is net current assets. Now coming back to matching concept again, matching it match the expense with the revenue of the period. Let's see what are the examples in the next question. On this, in this question, I want you to answer that, keeping in mind the concepts.
Oh, welcome, Omad. Anushe, the first one is the prudence concept. Prudence concept कहता है you take into account all the anticipated losses, right? So अगर आप cost के बजाय net realizable value पे कर रहे हैं तो mean net realizable value lower है जब उस पे value कर रहे हैं, right? So that is prudence concept. The first one is prudence concept. Number two is using the same inventory valuation method one after the second year. Remember हमने कहा था depreciation method और inventory valuation method. ये इनमें अगर आप change नहीं करेंगे तो ये consistency concept कहलाता है. You're using the same method year after year after year, and that is what we call consistency concept, right? So the first one is prudence, the second one is consistency. So what is the third one? Yes, I mean you're left with matching only. You match the depreciation expense with the revenue for the period, right? So the answer is only the third one. Depreciation is an example of matching concept. The first one is an example of prudence. The second one is an example of consistency. Tar, you getting what I'm saying? Mine, Abira, Umad, Hassan, Dua. It's the matching concept. Okay, let's move and discuss about prudence. Prudence says do not take into account any anticipated gains, right? But you take into account all the anticipated losses. So future में कोई gains नजर आ रहे हैं आपको, हवा में कोई चीज है, किसी ने कोई commitment की, आपने कहा market reputation बड़ी अच्छी है मेरे business की, you know, all these are not supposed to be recorded in accounting, right? Anticipated loss होगा तो उसको record करेंगे, लेकिन anticipated gain होगा तो उसको record नहीं करेंगे, right? Profit should not be stated, overstated. Assets should not be overstated. Assets को आप ज्यादा नहीं बढ़ा के नहीं दिखा सकते. Profit को आप बढ़ा के नहीं दिखा सकते. Prudence concept says it is not allowed that you raise your overstate your assets or you overstate your profit, right? Okay, let's see what is the next question we have. Okay, in this case, see, goodwill is an asset, right? वो कह रहा है आप एक एसेट रिकॉर्ड कर लें, उसका अकाउंटेंट कह रहा है नहीं भाई ये प्रूडेंस अप्रोच के अगेंस्ट है. प्रूडेंस अप्रोच क्या कह रही है? प्रूडेंस अप्रोच कह रही है डू नॉट ओवरस्टेट योर एसेट्स, डू नॉट ओवरस्टेट योर प्रॉफिट, राइट?
So that is the reason the accountant is saying him, please don't do that. Don't record goodwill. Goodwill is an asset, right? But you cannot overstate it. So prudence approach says don't do that, right? Okay. Can we move on to the next one? Abira, that's correct. That's correct. Umad, I'm glad you did the right answer. ओके अगेन हम वो कॉन्सेप्ट पे आए हैं जो हमने ट्यूसडे को बात की थी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड net realizable value, right? Or what is net realizable value? Selling price less all necessary expenses to make it sell. Selling price less all necessary expenses to make it sell is NRV, और NRV को किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट से. whichever is lower उस पे रिकॉर्ड करेंगे. Let's go to the question then. And this time every one of you should answer correct, and I'm waiting for each and every one to write the answer. Great Dua, brilliant, excellent उमाद. ताहा, तुम्हारा सिस्टम सेल्फ म्यूटेड है, अपनी वॉइस ऑन करो. मैं यहाँ से वॉइस ऑन कर रहा हूँ. यू कैन एक्सप्लेन इट एंड you know. Sir, is it on now? I can hear you. I believe the other can also. Can you please explain the answer? Sir, it originally cost 500, but the formula is selling price minus all necessary expenses, right? So the selling price is 600. So 600 minus 150, which is 450. And we'll value it at lower of cost or NRV. NRV is 450 and it is lower, so we'll value it at 450. Okay, great. Thank you very much. Right? See, what does he explain? Exactly the right thing. You know, he's comparing cost with NRV. And how did he calculate NRV? 600 minus 150. Selling price less all necessary expenses to make it sell. 600 minus 150 is 450. Now, 450 is NRV, 500 is cost. So he's recording it at lower of the two. So 450 is the answer. Right? Dua, brilliant, you know. Let's move on to the next one. Again, coming back to prudence, take into account all the anticipated losses and do not take into account any anticipated gains. Right? Profit should not be overstated and assets should not be overstated. Let's move on to the question.
Okay, great Dua. Good Abira, you're doing it right. Ta, going very well. Anusha will discuss this realization concept in class, right? But you can run through the concepts again. Just remind me before the end of the class, like 15 minutes before the class, we'll discuss the concepts again as class as a whole, right? Uh, that's right. The Omad, your answer needed. Hassan, your answer needed. My point is the answer is prudence, right? Let's go to the next one, right? And this is matching, right? Matching is to adjust. अगर आपने ज्यादा एक्सपेंस पे किया हुआ है and that belongs to next year as well, तो उसको माइनस कर देंगे, और कम एक्सपेंस पे किया हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे to have the right amount of expense to match with the right amount of revenue to calculate the profit. So you match the expenses with revenue, right? And you have to calculate the correct amount of expense, the exact amount of expense for the period. If there is some overpayment should be deducted. And if it is underpayment should be added, right? So let's see what is the next question we have regarding that. Great, Dua. You're doing very well. Umad, you're doing excellent. I'm glad you people are, picking up without no background, without any background of accounting. Abira, you're going fine. Ta, I'm opening your voice. Just explain it, whatever comes to your mind. Just try and explain that, Ta. Open the voice. Sir, can you hear me? Yeah, yeah, now I can hear you. Yeah, sir. So basically, I have applied the canceling concept over here. Yeah, It is that's not right. You're actually reducing the expense, right? yeah, and it is not consistency because this does not apply to consistency, and Right. this is not materiality as well, and it is Yeah, not materiality prudence. talks about the amounts, right? Yeah, a material level, and this Yeah. is not prudence. So it is matching B. Okay, so it's like, one way of doing MCQ is to Yeah, cancel out the other options, yeah, I've applied that way. right? That's fine with me. Uh, Omad, would you like to say something? Just let me know on the chat box here so I can open your voice. Yes, Omad. Thank you, Ta. Thank you very much. Omad, are you hearing me? Shall I open your voice? Okay, let's move on to the next one. Now, think and then give the answer.
Okay, great, Abira. Excellent, Dua. Ta, I'm opening your voice. Try and explain it. Yes, Ta. Sir, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah, so the option A is dual aspect, That's correct. Option A is dual expect. Brilliant. and option B is not historical cost, Okay, I and accept it. option C is, I think it is consistency, Okay. and option D is historical cost because all transactions are recorded at actual cost. All transaction and expenses are recorded at their actual cost, Cost. right? Yeah. That's correct. Brilliant. Thank you very much. You know, Before I call it a day, please give me some suggestions, right? What are your problems and how can it be better? Anusha, you need to take 4 more such sessions, after which you will be as good as any other participant here. But keep on writing all those items that you don't understand, and we will discuss them in class, and that will be your contribution in class as well, right? Don't get disappointed. There are certain terminologies that you don't know because you have no idea what we are talking about. But with the passage of time, it's like understanding a new language, right? So you will come across the same terminologies over and over again, and you will have the idea over a period of time. Give yourself 4 more sessions and you will be as good as any other participant. Please give me your feedback. How can I improve it? And let me know anybody else would like to open the voice or video, and I will do that in the next session. Right? And our next session will be on next Tuesday. Please give the feedback before you leave. Right? And let me know if you're willing to open your voice or you're willing to open your video, whether audio or video. Just let me know. Omad, Abira, Main, Ta, next time come with a you know smart dressing. I will open your face video. Okay. Thank you all for attending the session. Thank you all for participating. You know, it's been nice when I'm getting correct answers. And even if I'm not getting correct answer, at least people are learning and they have the keen interest in learning, and that is very heartening to me. Thanks, and it's over from my side now.